Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today the topic I've selected is very close to my heart for so many reasons. I was thinking about this topic from last whole month. I wasn't have the courage to talk about because I'm not sure how it's going to be perceived from your end. But here I am talking about depression in Muslim community. Normally, when we talk about this topic, there is always be a blind eye or people keep it under the carpet and not doesn't want to talk about it, but this is the reality. If you think about the Islamic history, Holy Prophet, peace be upon him, who was the best among the best, he has also gone through some time where he was feeling low. Whether we talk about when Surah Doha has been revealed after a gap of the revolution of Quran, and then when his beloved son has passed away and Surah Kausar has been revealed. In that context, if we think about it, we should be understanding that this is something a part of human nature, like other all feelings are there. This is one of the feeling, a low feeling, a feeling of not a continuous sadness. But what we do is basically we use the wrong vocabulary to the people who are suffering from depression or low moods, and then we push them to the more deeper end, or we pull them completely away from us, and then they end up in suicidal attempts, they end up self-harming. I'm working with so many clients who are Muslims, but they do. And when we say la taqnutu min rahmatillah, sometimes people don't actually not hopeless towards nauzubillah from Allah Rahman, but they are hopeless towards the situation around them. So how we are going to use the vocabulary is very important. So first of all, please don't say to them that it's kufr, it's shirk, it's haram, because then you are going to make them guilty on the top of what they are already feeling, which is not so great. So listen to them. Be interesting in their stories, be interesting in what's going on in them. Try to, if not fix the situation, which we can't, try to be there for them, and you will find that they will inshallah come back in that way. Listening is the biggest help we can do. Depression is almost, I always use the analogy that if you are upstanding situation like a normal what we do, low mood is certainly a kind of a ruku place, a kind of bending down where we are not sure where we are going, and we are having lack of energy, lack of motivation, lack of confidence, lack of a lot of other things going on. And then when we have been heard these kind of statements, then we end up completely shut down, and that's kind of almost completely in a sujood place where we completely shut down. So you need to not let them shut down. You need to help them. You need to make them aware that there is a supreme power. Allah subhanahu wa ta'ala is there, and they can still build up the connection, and they can still have the hope of so many other things. I'm hoping that this video will help you to understand and be aware of this big issue which is around us, and we don't want to hear that more often. Look after yourself, keep smiling. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करूँगी आपसे वो मेरे दिल के बहुत करीब है, और उसकी वजह यह है कि बीइंग अ मुस्लिम मुझे ये लगता है कि इस टॉपिक पे हम बात करते हुए गुरेज करते हैं, हम इसको अवॉइड करते हैं। हमें लगता है कि शायद इससे के बारे में बात करना शायद हमारे मजहबी व्यूज़ से क्लैश करेगा। मैं जिस टॉपिक पे बात करने लगी हूँ वो है डिप्रेशन इन इस्लाम। नॉर्मली हमने बहुत दफ़ा लोगों के मुँह से सुना है ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, और मायूसी कुफ्र है, और ये तो हराम है, नहीं सोचना चाहिए, ऐसे मत सोचें। लेकिन जब मैं इसके बारे में देखती हूँ इस्लामिक हिस्ट्री, तो मुझे पता चलता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दुनिया में सबसे अज़ीम अंबिया से भी अज़ीम थे, उन्होंने भी ऐसा टाइम आया उनकी लाइफ में जब वो थोड़ा
परेशान और सैड फील करने लगे। चाहे वो वक्त वो था जब कुरान का नुज़ूल में थोड़ा गैप आ गया और फिर सूरह दुहा उतरी, जिसको हम एंटी डिप्रेशन भी आज के दौर में कह सकते हैं, और वो हमें होप दिलाती है। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे जब वो इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए, तो उस वक्त जब उन्होंने वो परेशान थे, तो नबी पाक के लिए सूरह कौसर का नज़ूल हुआ, जिसमें एक होप दिलाई गई। अब हम जब एज अ मुस्लिम, एज अ ह्यूमन बीइंग देखते हैं, तो ये बात हमें इस बात पे का एहसास दिलाती है कि दिस मीन्स ये डाउन फीलिंग भी या डिप्रेशन भी एक ऐसी ही फीलिंग है जैसे और बहुत सारी फीलिंग्स हैं। हम खुश होते हैं, हम गुस्सा होते हैं, हम फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, वैसे हम परेशान भी हो सकते हैं, हम डाउन भी हो सकते हैं, हम डिप्रेस भी हो सकते हैं। लेकिन होता क्या है, और उसमें ज़रूरी नहीं कि हम नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह की रहमत से मायूस हो रहे हैं, हम लोगों के और रुझानात से और सिचुएशन से भी मायूस हो सकते हैं। तो अब अगर ऐसी सिचुएशन में जो वोकैबुलरी लोग इर्द गिर्द यूज़ करते हैं, वो हम लोग को ऐसे पेशेंट्स को और ज़्यादा दूर करती है अपने आप से। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं किसी को ये कहूँ कि ये तो कुफ्र है, तो फिर उसके अंदर एक गिल्ट भी आ जाएगा उस बंदे में। ऑलरेडी वो परेशान है, ऑलरेडी वो डाउन है, फिर गिल्ट भी आ गया, तो हम उसको पुश अवे कर रहे हैं कि हम वो एक्स्ट्रा सपोर्ट कहीं से भी ले सकें। सो ऐसी सूरत में करना ये है एज अ मुसलमान कि हम आप उसकी बात सुने, हम उनको कोई जजमेंटल रिमार्क्स ना दें। हम कोशिश करें कि हम उनकी हेल्प कर सकते हैं तो करें, वरना राइट सपोर्ट की तरफ उनको साइन पोस्ट करें, उनको बताएं कि ये जगह है जहाँ पे आप हेल्प ले सकते हैं। बाय जस्ट कीपिंग अ ब्लाइंड आई, बाय इसके बारे में ना सोचने से कुछ भी हासिल नहीं होगा, बल्कि सिचुएशन और ज़्यादा वर्स्ट हो सकती है। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ काम करती हूँ जो सुइसाइड, ख़ुदकुशी की भी अटैम्प्ट्स कर चुके हैं, जो अपने आप को काटते भी हैं, सेल्फ हार्म भी करते हैं। तो इसका मतलब हम अगर जजमेंट्स उनको देना शुरू कर देंगे, तो फिर वो जो होप है भी, जो वो हेल्प ले भी सकते हैं, उससे भी जाएंगे। सो मेरी आपसे गुजारिश ये है कि अगर आप ऐसा कोई इंसान देखें तो उसकी बात सुने, उस पर कोई जजमेंट्स या रिमार्क्स ना दें, उनकी हेल्प कर सकते हैं तो करें, अगर नहीं कर सकते तो उनको उन लोगों के पास हेल्प के लिए भेज दें जो उनकी हेल्प कर सकते हैं। लुक आफ्टर योर सेल्फ, कीप स्माइलिंग। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।